Hello बच्चों, let's start International Computer Science Olympiad. Most expected question for class 7. So the first question is, which part of the computer is called the brain of the computer? Monitor, keyboard, CPU, mouse. So the correct answer is CPU, that is Central Processing Unit. What does RAM stand for? RAM क्या होता है? Read and memory, random access memory, run any module, real audio memory. करेक्ट आंसर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये जो होती है ये टेम्पररी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के द्वारा यूज की जाती है। विच स्टोरेज डिवाइस हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी लार्जेस्ट होती है? फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, हार्ड डिस्क। करेक्ट आंसर इज हार्ड डिस्क। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रियल लिंक, यूनाइटेड रिमोट लॉगिन, यूजर रेडी लेआउट। So the correct answer is Uniform Resource Locator. ठीक है, that is the address of the web page. Which key is used to permanently delete a file? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी की जो है वो किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए यूज की जाती है? डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, अल्ट प्लस डिलीट। So the correct answer is that is shift plus delete. A kilobyte, 1 kilobyte is equal to how many byte? 1 kilobyte is equal to कितने बाइट होते हैं? Options are 100 bytes, 512 bytes, 1000 bytes, 1024 bytes. Correct answer is 1024 bytes. Which of the following is an input device? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड। Correct answer is that is keyboard is an input device. What does www stand for in a website address? नीचे दिए गए ऑप्शन में से वेबसाइट एड्रेस में www means what? World Wide Web, Wide World Web, Web World Wire, World Wire Web. Correct answer is World Wide Web. Which software is used to browse the internet? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट ब्राउज के लिए यूज किया जाता है? MS Word, वेब ब्राउजर, MS Excel, नोटपैड। करेक्ट आंसर इज वेब ब्राउजर। ओके, तो ऑप्शंस क्या आंसर क्या है? जैसे कि वेब ब्राउजर कौन से होते हैं? जैसे कि क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है। These are used to access the website on the internet. Which is the shortcut key to undo an action? एक्शन को अंडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस यू। करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस जेड। सेक्शन 2, विच MS ऑफिस टूल इज यूज टू मेक प्रेजेंटेशन? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आंसर है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस। करेक्ट आंसर इज MS पावर पॉइंट। ठीक है, इज यूज टू मेक अ प्रेजेंटेशन। इन MS वर्ड विच मेन्यू इज यूज टू चेंज फॉन्ट स्टाइल? कौन सा यूज किया जाता है? ऑप्शन फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए। इंसर्ट, व्यू, होम, टूल्स। करेक्ट आंसर इज होम। विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर MS वर्ड डॉक्यूमेंट? MS वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन वहां पे यूज होता है? .xls, .ppt, .docs, .txt। करेक्ट आंसर इज .docx। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव अ फाइल? किसी फाइल को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस ए। Correct answer is Control plus S is the shortcut key to save a file. In MS Excel, what is a group of cell called? Group of cell is called as cell range. Which of these is not an operating system? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? Windows, Linux, Android, Chrome. Answer is Chrome. It's not an operating system. Remaining are the operating system. What is the shortcut key to copy the selected text? ये बहुत इजी क्वेश्चन है. That is Control plus C is the shortcut key. In MS Word, what does the bold formatting do? Bold formatting से क्या होता है? Make text italic, make text thicker, underline text, changes font size. Correct answer is make text thicker.
Which shortcut key is used to select all text atom? कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है सभी टेक्स्ट एटम को सिलेक्ट करने के लिए? कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस डी. करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस ए. What does the F2 key do in MS Excel? MS Excel में F2 की का यूज क्या है? That is save the file, edit the selected cell, opens a new file, copies the cell. Correct answer is that is edit the selected cell. What does HTTP stand for? The HTTP stand for Hypertext Transfer Protocol, High Transfer Text Process, Home Transfer Technology Protocol, Hyperlink Tool Transfer. Okay, ये भी इजी क्वेश्चन है. सही आंसर देना है that is Hypertext Transfer Protocol. Which of these is a valid email service? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वैलिड ईमेल सर्विस है? गूगल क्रोम, जीमेल, गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव. करेक्ट आंसर इज दैट इज जीमेल. What does IP stand for in networking? नीचे दिए गए ऑप्शन में से IP नेटवर्किंग में उसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट पोर्ट, इंटरनेट पासवर्ड, इंटरनल पोर्ट, इंटरनेट पासवर्ड, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. करेक्ट आंसर इज दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल. IP stand for internet protocol. A computer virus is a type of hardware, malicious software, operating system, storage device. A computer virus is a type of malicious software. What is the purpose of firewall? Firewall का purpose क्या है? Cool the CPU, speed up internet, protect from unauthorized access, format the hard disk. सही आंसर देना है that is protect from unauthorized access. Which device is used to connect a computer to the internet via phone line? नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो यूज किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा? Answer is that is modem. Modem is the device used to connect a computer to the internet via phone line. What does LAN stand for? LAN का full form क्या है? That is large area network, local area network, long access node, linear access network. ठीक है, तो आपको सही आंसर चुनना है. लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था. जो क्या करता है? कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है स्मॉल एरिया, जहाँ पे बहुत कम एरिया होता है वहां पे वो कनेक्ट करता है, जैसे कि स्कूल, वहां पे यूज किया जाता है. व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन क्या होता है? अ डिवाइस टू स्टार्ट कंप्यूटर्स, अ टूल टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, अ टाइप ऑफ ईमेल, अ सॉफ्टवेयर टू डिजाइन वेबसाइट्स. सो सर्च इंजन होता है टूल टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. विच ऑफ दिस इज नॉट अ सर्च इंजन? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बिंग, याहू, फेसबुक. Correct answer is Facebook is not a search engine. Remaining are all the search engine. What is Wi-Fi used for? That is full form of Wi-Fi. That is wired internet connection, wireless internet connection, printing document, storing large files. Correct answer is wireless internet connection. Section number 4, programming and algorithm. What is an algorithm? It's a type of virus, a step-by-step instruction to solve a problem, a programming language, a computer game. Algorithm is a step-by-step instruction to solve a problem. Which of these is a programming language? HTML, Internet Explorer, MS Word, Bluetooth. नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? So the answer is that is HTML. What does a flowchart show? Flowchart क्या दिखाता है? A type of graph for maths, a step-by-step flow of program, a computer hardware connection, a network map. Flowchart shows a step-by-step flow of program. What symbol is used for decision in a flowchart? फ्लोचार्ट में डिसीजन के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? रेक्टेंगल, सर्कल, डायमंड, ओवल. करेक्ट आंसर इज दैट इज डायमंड इज यूज्ड फॉर डिसीजन इन अ फ्लोचार्ट. इन प्रोग्रामिंग व्हाट इज द लूप यूज्ड फॉर? लूप किस लिए यूज होता है? जंप टू अनदर प्रोग्राम, रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टॉप द प्रोग्राम, प्रिंट अ मैसेज. So loop is used for to repeat a set of instruction.
व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में आउटपुट क्या होता है? और डेटा एंटर बाय यूजर, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, रिजल्ट प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर, स्टोरेज ऑफ डेटा. So output of a computer is nothing but a result produced by a computer. What does bit stand for? Bit क्या होता है? Binary integer, binary digit, basic integrated technology, byte integrated timing. ठीक है, तो आपको सही आंसर देना है. Bit stand for binary digit. How many bits are in one byte? One byte में कितने bits होते हैं? 4 bits, 16 bits, 8 bits, 2 bits. आपको सही आंसर देना है. So the correct answer is 8 bits. What is the number system used by computer? Computer से जो number system use की जाती है वो what is that? Decimal that is having base 10, octal that is having base 8, binary having base 2, hexadecimal having base 16. So the correct answer is that is binary having base 2. Which of these is an example of open source software? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा open source software है? Microsoft Windows, MS Office, Adobe Photoshop, Linux. Correct answer is that is Linux is an example of open source software. Section number 5, General Computer Knowledge. What is the main function of operating system? Operating system का main function क्या है? Connect to internet, manage computer hardware and software, edit photos, create document. Okay, so main function of operating system is to manage computer hardware and software. Which key is used to get help in most Windows program? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी की हेल्प करती है बहुत सारे विंडोज प्रोग्राम में? F1, F5, F10, एस्केप. करेक्ट आंसर इज F1. व्हाट इज कर्सर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन? कंप्यूटर स्क्रीन पे कर्सर क्या होता है? इट्स अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अ ब्लिंकिंग पॉइंटर कंट्रोल बाय माउस, अ टाइप ऑफ फॉन्ट और टास्क बार. कर्सर जो होता है वो होता है ब्लिंकिंग पॉइंटर जो माउस से कंट्रोल होता है. व्हाट डज कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट डू इन विंडोज? Shuts down the computer, deletes all files, opens task manager or security options, restart the computer. Correct answer is open task manager or security options. Which of these is a type of computer? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कंप्यूटर का टाइप है? लैपटॉप, वाईफाई, ब्लूटूथ, यूएसबी. करेक्ट आंसर इज दैट इज लैपटॉप. What does PDF stand for? PDF का फुल फॉर्म क्या है? प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डेटा फाइल, पब्लिक डिस्प्ले फॉर्मेट. ठीक है, तो आपको सही आंसर चुनना है. दैट इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. व्हाट इज द स्प्रेडशीट यूज फॉर? स्प्रेडशीट किस लिए यूज होती है? डिजाइनिंग द वेब पेजेस, राइटिंग एसेज, ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन रोज एंड कॉलम, एडिटिंग वीडियोज. तो आपको सोचना और आंसर देना है. सो स्प्रेडशीट इज यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन रोज एंड कॉलम. व्हाट इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? अ पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, सुपर कंप्यूटर. सो सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर. व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? कंप्यूटिंग इन रेनी वेदर, यूजिंग इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज एंड सर्विसेज, अ टाइप ऑफ वेदर फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर, कनेक्टिंग कंप्यूटर्स यूजिंग केबल्स. सो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है यूजिंग इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज एंड सर्विसेज. Which shortcut key is used to print a document? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी शॉर्टकट की है जो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज होती है? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एफ. सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस पी is the shortcut key which is used to print a document. ओके, तो इस तरह से हमने ये वीडियो कंप्लीट किया है. तो देखिए इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि टॉपिक वाइज आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाना चाहिए और वहां पे जो आंसर स्लाइड में एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी आपको पढ़ना है सो दैट आपके वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एक साथ वहां पे कवर हो सकते हैं. ठीक है,
तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।